Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को एटी ऑल रे सेट करदेव तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें स्केलर प्रोडक्ट ड्युअल वेक्टर स्पेस आउ कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी विषय रे पढिबा सो फास्ट देखिबा व्हाट इज ए स्केलर प्रोडक्ट या को हमें इनर प्रोडक्ट मध्य कहि परिबा ओके सो इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज जनरली डिफाइंड बाय इंट्रोड्यूसिंग द कांसेप्ट ऑफ ड्युअल स्पेस बा ड्युअल वेक्टर स्पेस ओके या विषय हमें आकु देखिबा सो सपोज गुटे ड्युअल स्पेस हमें नउचो Ln plus which consists of vectors having one to one correspondence with the vectors of another space that is Ln that means in other words each vector alpha in the space determined by the basis ui in the vector space Ln there correspond to another vector that is alpha plus in the dual space which is determined by another vector ui plus such that a condition here hela alpha plus should be equal to summation I equal to 1 to n alpha I star ui plus it is जो ये star mark दिया है that means it is the complex conjugate of alpha I okay now the inner product by scalar product okay of two vectors u and v in the vector space is defined by uv which is equal to vu star okay and this is nothing but the integration u star v of dx and it is equal to c which is of course a constant it is a number which may be a complex one right so जेमती हमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स रे डॉट प्रोडक्ट बा स्केलर प्रोडक्ट कहूला जेमती ए डॉट बी होतला ओके से जगह रे ए डॉट बी रो वैल्यू हमें देखुतला ए बी cos थीटा बट एठी याकू ए स्केलर प्रोडक्ट को हमें टिके अलगा हिसाब रे देखुछु से जहाँ भी हो सपोज हमें कंसीडर करिबा u v w एज थ्री वेक्टर्स लीनियर वंस ओके सो लीनियर वेक्टर स्पेस रे हमें जदि तीनटा वेक्टर नेला u v w and we take a b as complex numbers then we will require u v plus w माने एटा स्केलर प्रोडक्ट हला एटा देखो डिस्ट्रीब्यूट हे गला u v plus u w जेतु लीनियर वेक्टर स्पेस रे अछि सिमिलरली u b v b एठी कांस्टेंट बाहर को पळे आसला b ऑफ u v ओके सिमिलरली जदि हमें एबे याकू a लगेबा सामना रे तेबे देखो एटा कॉम्प्लेक्स आसुची ओके सो ध्यान दियो जदि सेकंड रे अछि ताले तो एज इट इज रोज रियल किंतु जदि फर्स्ट रे अछि एटा कॉम्प्लेक्स आसी गला ओके इट्स जस्ट लाइक तमरो जो ब्रैकेट नोटेशन क्वांटम मैकेनिक्स रे तमे पढिथिबो ओके अच्छा तापरे जदि बोथ द वेक्टर्स रे हमें एबे कांस्टेंट नंबर्स एसोसिएट करिबा a u b v ताले जोटा आगो अछि सेटा कॉम्प्लेक्स हि जिवो दैट इज a स्टार तापरे b देन u v ओके देन w a u plus b v एटा ही गला देखो ए हिसाब रे डिस्ट्रीब्यूट ही गला a w plus b w v ओके एंड फॉर द इनर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ निजे निज सहित जदि हम इनर प्रोडक्ट देखिबा गोटे वेक्टर रो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ओके सो मने रखो ए जो स्केलर प्रोडक्ट बा इनर प्रोडक्ट इट इज नॉट लाइक योर डॉट प्रोडक्ट जोटा वेक्टर एनालिसिस रे तमे देखुतिलो ओके बिकॉज डॉट प्रोडक्ट जदि हमें सिंपली ए डॉट ए करिबा ताले यार वैल्यू कोन आस्तला ए स्क्वायर आस्तला राइट आ एटा 0 हे पारे न भी हे पारे सो सिमिलरली एठी किंतु टिके एटा अलगा अछि यू माने निजे गोटे वेक्टर निज सहित जदि वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी स्केलर प्रोडक्ट जदि करिबा इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 विथ द इक्वालिटी साइन केते बेले एटा होल्ड करिवो इफ एंड ओनली इफ u इज ए नल वेक्टर जते बेले नल वेक्टर हेतो माने 0 0 एई भलिया केस रे ही एटा इक्वल टू 0 हबो राइट अच्छा द पॉजिटिव स्क्वायर रूट
of a vector u with itself, that is square root of u is called the norm. याको हमें norm कहबा or simply the length of the vector u. And if the norm of a vector is equal to unity, then it is called as the unit vector or a normal vector. And such vectors are conventionally distinguished by carets over them, माने ता ऊपरे जो carets बा इनती जो cap लगा जाए. Okay, अच्छा. So those vector spaces in which an inner product exists are called as the unitary vector spaces. याको हमें unitary vector space कहबा जो थरे कि inner product exist करूची, right? अच्छा, आको बढ़िबा. Now what is the dual space or dual vector space? So देखो, the set of all linear functions f on L denoted by L star or V of LF, where f being a field with respect to two composition, such that f1 plus f2 alpha equal to f1 alpha plus f2 alpha एटा distribute ହେଇଗଲା for all alpha element of L. Similarly गोटे constant जदि नहीं गला हमें a, such that a f alpha is equal to alpha f alpha. Okay, so this is also valid for all alpha element of L and a element of f. Okay, so এই जो condition দুইটা को যদি satisfy କରୁଛି, then this will be called as a dual space or dual vector space of L, that is L star is equal to f where L is tending towards f such that f is a linear function. Okay, acha ebe akku padiba. Let us see what is the orthonormal sets or orthonormal basis भी कहि पारो, right? देखो orthonormal कहले actually it is the combination of two words. एटा तमे क्वांटम मेकानिक्स रे भी orthonormality condition पढिथिबो. गोटे हला orthogonal आ गोटे हला normal. So if the scalar product of two non null vectors is 0, then the vectors are said to be orthogonal. Okay, so u v जदि दुईटा orthogonal vector ताले scalar product टा 0 हवा कथा. At the same time, if the scalar product of a vector with itself is unity, then the vector is said to be normalized to unity. So जदि गोटे वेक्टर अछि u, एटा जदि normalized to unity ताले u यार जो scalar product टा should be equal to 1. ताले the set of vectors which is orthogonal to all the remaining vectors of the set is called an orthogonal set. And if each of the vectors of the set is further normalized to unity, then it is called orthonormal. Okay, प्रथमे orthogonal हला प्रत्येक वेक्टर सहित सेही सेट रे थिबा, तापरे निजे normalize हला पुनी unity सहित. ताले एई दुईटा कंडीशन जदि फुलफिल हला ताले हमें ताकू कहिबा orthonormal set. Okay, so the vector can be normalized by dividing it by its norms. Thus जदि गोटे वेक्टर हला u is any vector, suppose ताले u by square root of u एटा हला तार norm टा, so it is the normalized vector which is parallel to u. Okay, and a set of n vectors which is suppose ui, I रो value suppose finite में निकला 1 2 3 4 up to n, is an orthonormal set if and only if condition दे देला ui uj should be equal to, एठी हमें यूज करूछु क्रोनेको डेल्टा सिंबल, that is delta ij. Okay, ij रो value 1 2 3 4 up to n. Okay, where delta ij should be equal to 1 केतेबेले हबो जेतेबेले I रो value j सहित समान, आ 0 हबो केतेबेले जेतेबेले I is not equal to j. Okay, now also the set of unit vectors ei, where I again equal to 1 2 3 4 up to n, form an orthonormal set. Okay, acha now the orthonormal vectors are linearly independent and orthonormal set can serve suitable basis. Okay, गोटे orthonormal set टा गोटे basis भलिया काम करथाय, जोटा कि हमें आपको देखिबा orthonormal basis. So using the relation 3,
we obtain the inner product of two arbitrary vectors, suppose a b आमे तार वैल्यू अब पुट कला तो फाइनली आमे पाउछु जो रिलेशन को यूज करिकी a I स्टार b j डेल्टा I j ओके या ऊपर समेशन ओवर I समेशन ओवर j लागिछि ओके दैट इज a b ए जो स्केलर प्रोडक्ट इट इज इक्वल टू डेल्टा I j जो अछि या को हमें 1 नेबा केते बेले जेते बेले I इक्वल टू j हेबो सो समेशन j टा हटि गला I इक्वल टू 1 टू n रहिला okay because I equal to j ହେଇଗଲା so a I star b I okay so in particular if we set b equal to a ताले a ए जो स्केलर प्रोडक्ट केते हे जिवो simply I equal to 1 to n a I star ठीक सही बळा जेमती a dot a equal to a square होतला okay so mod a I रो स्क्वायर ହେଇगला so the norm or the length of this vector a याकू केमती बाहर करिबा it is nothing but the magnitude of this vector so या एरो वैल्यू टा हला स्क्वायर रूट बा a रो आमे टू द पावर हाफ नहीं गला ओके सो यार वैल्यू टा आमे जोटा पाइथिला याकू पुट कर देला टू द पावर हाफ लगे देला now a remark a point here to remember that these relations show similarity between a complex scalar product and the ordinary scalar product of two real vectors in space okay so जेमती मु कहउतली a dot b equal to ab cos theta होतला so cos ab this is the angle so एटा को हमें लिखि परिबा as a summation I ai bi and since the cosine of any angle always lie between plus or minus 1 so we obtain a dot b to be less than or equal to mod of ab so ए जो relation टा तमे लास्ट देखिबा को पाउछो it is analogous with the theorem that is mod of uv should be less than equal to square root of UUVV and by squaring we are getting this much which is nothing but the Schwarz inequality okay या विषय रे आपको डिटेल में देखिबा okay so up to this I have taken from one book now this I have taken from another book ठीक है आउ टिके डिटेल स्केलर प्रोडक्ट विषय रे एथिरे देइछि okay you can see तार डेफिनेशन देला स्केलर प्रोडक्ट रो okay then स्केलर प्रोडक्ट रो किछिटा बेसिक प्रॉपर्टीज देला ऑलरेडी हमें ए सब प्रॉपर्टी देखि सारिछु ओके अच्छा आकु बढ़िबा देखो तापरे केतेरा एग्जांपल रे ये स्केलर प्रोडक्ट को बुझाउछि सॉल्व करिकि ओके स्केलर प्रोडक्ट नि गला सपोज 5152 रो तारो स्केलर प्रोडक्ट पुनी बाहर करूछि ओके अच्छा तापरे देखो एठी यस दिस इज द कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी जोटा एबे टिके हमें डिटेल याकू पढिबा so in connection with the scalar product there is an important inequality माने इक्वालिटी रहिबो नाही ओके inequality एठी less than equal to बा greater than equal to रो पॉसिबिलिटी अछि सो एटा होची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी बा कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी याकू कहा जाय स्टेटमेंट हला स्केलर प्रोडक्ट जदि हम नउचू 5151 dot by into 5252 this should be greater than or equal to mod of 5152 यार होल स्क्वायर ओके सो यार प्रूफ जदि देखिबा सपोज लैम्डा गुटे नै गला हमें एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ओके ताले 51 प्लस lambda 52 51 plus lambda 52 okay both are same you can see okay यारो जदि हमें स्केलर प्रोडक्ट नउचू it should be obviously either positive or equal to 0 negative तो ही परिबनी so greater than or equal to हमें 0 याकू लेखिला अच्छा तापरे एबे हमें जो प्रॉपर्टी देखुतला स्केलर प्रोडक्ट रो ऑलरेडी इक्वेशन एई सब इक्वेशन रे तार प्रॉपर्टी हमें देखुछु सो ताकू यूज करिबा एंड वी गो ऑन फॉर फर्दर सॉल्विंग ओके सो फर्दर सॉल्विंग ये कला एंड वी नो दैट लैम्डा रो वैल्यू होची माइनस ऑफ 5251 बाय 5252 ओके सो यार वैल्यू टाकू ये पुट कला okay because this equation will be true for any complex number that is lambda okay so ebe ei jo equation 7.10 आसला सब्स्टिट्यूट करिबा ई lambda रो वैल्यू को ई जगह रे okay ei jo lambda रो वैल्यू टाकू ई जगह रे पुट करिबा and again we go on for solving okay so after this we are finally arriving at our result this much 5151 into 5252 should be greater than or equal to 5152 mod square okay try karibo it is very easy
to understand. Then this is the orthonormal basis. ऊपर आमे देखिला orthonormal set विषय रे. So orthonormal basis माने same जिनस ही definition देखो, the norm of a vector phi in a linear vector space is defined to be a positive real number, that is mod of phi, okay, which is associated with phi, such that the following properties should be satisfied. Again केतरा property देखो ये हिसाब रे दे देला. Okay, जो तमरो greater than equal to 0 रहउची, then mod phi equal to 0 केतेबेले हबो जदि phi रो value equal to 0. तापर distributive law लागुची for any constant that is arbitrary complex number alpha. तापर এই जो distribution जोटा हमें Schwarz inequality रे देखिला, okay, ताहा भी satisfy करिबा कथा. So a convenient way of realizing the norm in case of a vector space with a scalar product defined in it is through the scalar product itself. Okay, so though this is not the only way, so the norm is not unique. Okay, unique किछि बोली norm एमती नहीं, and in such a space the positive square root of the scalar product of a vector with itself can be taken as the norm of the vector. माने simple words रे आमे देखि पारुछु एठी norm को आमे लिखिदेला स्क्वायर रूट ऑफ 5 5. ओके, जोटा ऊपर आमे देखुतला ऑर्थोनॉर्मल सेट रे. सो इन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर याको आमे यूज करबा एज ए डेफिनेशन ऑफ द नॉर्म. सो फर्स्ट तीनटा प्रॉपर्टी आमे डायरेक्टली पाई परिबा फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. सो याको ये प्रूव करूची. ओके, ये पार्ट को मु स्किप कर देली. देन मूविंग फर्दर देखो, लेट अस सी नाउ दिस डेफिनेशन. जदि दुईटा वेक्टर नौछु आमे phi1 phi2 and they are said to be orthogonal, again same जिनस एठी देला. orthogonal केतेबेले हबो जेतेबेले तार स्केलर प्रोडक्ट 0 होउची. ओके, and a set of n vectors phi1 phi2 up to phi n is said to constitute an orthonormal set. जेमति आमे ऊपर देखुतला, if the vectors are orthogonal to one another and also if each of them is normalized to unity. Okay, so एठी आमे क्रोनेकर डेल्टा सिंबल यूज कला. ओके, सो सेम जिनस एठी भी देछि बट इन ए प्रॉपर सिस्टमैटिक वे. ओके, सो याकू I advise you to go through this book also, the second one, and make your note accordingly. Okay, Thank you.